हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में वी विल डिस्कस कि आने वाले टाइम में कौन सी जॉब्स, कौन से टेक्निकल स्किल्स डिमांड में रहेंगे इन कनाडा। और ये जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उनमें से हैं जो अभी अभी कनाडा आए हैं या कनाडा आने का सोच रहे हैं या कनाडा आने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि यहाँ आने के बाद आपको किस फील्ड में करियर बनाना है और उसके लिए क्या क्रेडेंशियल्स ज़रूरी होंगे और कौन से टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। सो माय नेम इज़ निशांत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कोविड का हाल कनाडा में भी बाकी जगह जैसा ही है, मतलब केसेस हो रहे हैं बट स्टिल थिंग्स आर प्रीटी मच इन कंट्रोल। एंड बाकी जगह की तरह कनाडा में भी कोरोना की एक सेकंड वेव आई थी जब केसेस थोड़े बढ़ने शुरू हो गए थे, बट थिंग्स हैव इम्प्रूव नाउ एंड जॉब मार्केट भी थोड़ी बेटर होती दिख रही है। बट बिफोर वी मूव इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ ईच इंडस्ट्री एंड फील्ड, पहले थोड़ा इन जनरल कनाडा जॉब मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। Many employers are bringing back their workers who were initially laid off. Hiring has picked up and job market is expected to improve further by the next year, that is 2021. बट क्योंकि अभी कंपनीज के रेवेन्यूज पूरी तरह रीबाउंड नहीं हुए हैं, इसलिए मोर देन फुल टाइम एम्प्लॉयज टेम्पररी स्टाफ ज़्यादा हायर हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली हायरिंग अ टेम्पररी स्टाफ गिव्स द कंपनीज मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड उन्हें वो हेल्थ बेनिफिट्स और अदर बेनिफिट्स देने में खर्चा भी नहीं करना पड़ता। एंड अगर हम सैलरीज की बात करें तो सैलरीज आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन फ्लैट फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट या फॉर द मेजर सिटीज लाइक टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी एंड मॉन्ट्रियल, the starting salaries are expected to increase but by merely 2 to 3%. But if you have the right technical skills, the right credentials, then there would be a high demand for you. अब बात करते हैं ओवरऑल बेनिफिट्स पैकेज की। सो यहाँ पे मोर देन 50% एम्प्लॉयर्स इन कनाडा ऑफर एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस, विजन इंश्योरेंस, मैचिंग RRSP contributions, paid time offs, and अब due to COVID the companies have also started offering remote work options. So yeah, overall you can expect a great benefits package here in Canada. अब आप सोच रहे होंगे कि ये RRSP contribution क्या चीज़ है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है और इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 4 मोस्ट पॉपुलर फील्ड्स हियर इन कैनाडा विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस और अकाउंटिंग, IT and marketing. So now let's dive into the specifics of each field. So starting with the administrative field, so we all know that especially इस time पे, during the COVID, technology की importance कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। Companies are investing heavily to build robust technologies and digital infrastructure. But at the end, इन technologies को फर्स्ट हैंड यूज़ करने वाले तो सपोर्ट स्टाफ ही होता है। सो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और 2021 में भी रहेगी। Now talking about the positions that would be in demand are administrative assistant, executive assistant and customer service representative, or we can say call center representatives. In fact, what we noticed that during the COVID, ये जो यहाँ पे जो top 5 banks हैं which are CIBC, TD, RBC, BMO एंड स्कॉशिया बैंक, यहाँ पे हार्डली कोई रिक्रूटमेंट हो रही थी। बट एट द सेम स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्रांच बैंकिंग, बट एट द सेम टाइम इनके कॉन्टैक्ट सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग हो रही थी। एंड ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो ब्रांचेस में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। इनफैक्ट सम ऑफ द स्मॉलर ब्रांचेस वर क्लोज्ड एंड सम ऑफ द ब्रांचेस वर मर्ज्ड विद द बिगर ब्रांचेस एंड ज़्यादा पब्लिक डीलिंग जो है दैट वाज हैपनिंग थ्रू देयर कॉन्टैक्ट सेंटर्स, इसलिए वहाँ पे हायरिंग का एक काफ़ी ज़्यादा सर्ज आया। And similarly it was the case with other industries as well. Now if we talk about the credentials that would be in demand for the administrative professionals, then these are Canadian Certified Administrative Professional, that is CCAP, then Certified Associate in Project Management, CAPM, and within the administrative field if we talk about the HR, then the credentials that would be in demand are CHRP, that is Certified Human Resource Professional, CHRL, that is Certified Human Resource Leader, and if you are interested in recruitment only, then go for RPR, that is Registered Professional Recruiter. It is less time consuming and less expensive if we compare it with the CHRP, and it focuses on one niche of the HR, that is recruitment. So if that is what interests you the most, then go for RPR rather than CHRP. Now let's talk about the salaries that you can expect for these jobs.
So an executive assistant can earn somewhere between 50,000 to even 90,000 Canadian dollars per annum. An administrative assistant can earn somewhere between 32 to 70,000. Data entry specialist can earn somewhere between 30 to 50,000. Customer service representative can earn somewhere between 32,000 to 50,000 Canadian dollars per annum. An HR benefits coordinator can earn somewhere between 50 to 70,000. And a recruitment specialist can earn somewhere between 42 to $62,000. And rest of the salaries, you can see it on the table. So what we have observed is that apart from technology, if there is a profession that remains high in demand, then that is finance or accounting. Matlab, if you are from IT or from finance or accounting, then you may find a job relatively easily if you do the right certifications and acquire the right credentials yahan pe aate hi. So we will talk about these credentials in a short while, but first let's discuss about some of the positions that are expected to be in demand. And these are accounts receivable, accounts payable, bookkeeper, financial analysts, accountants, financial planners, and payroll specialists. And as you know that apart from banks and financial institutions, financial professionals are required by other industries as well. So be it construction, manufacturing, IT, telecom, etc. But just like the administrative field, even in accounts and finance, at this moment, contractual jobs are more popular as compared to the full-time jobs. In fact, जब कोविड नहीं भी था, even then we noticed कि कनाडा में contractual jobs का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. So if you are coming to Canada, then be flexible and open to do contractual jobs as well. And now let's talk about some technical skills that would be in demand for the finance professionals. And these are advanced Excel, ERP systems like SAP for finance, payroll systems like ADP and Workday, and QuickBooks obviously for bookkeeping and accounting. And Canada में apart from technical skills, I mean hard skills, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है. आई मीन काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है. सो द सॉफ्ट स्किल्स दैट वुड बी लाइक रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव आर कस्टमर सर्विस, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग, एंड बाइलिंगुअलिज्म, दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज. अब मुझे पता है ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट आपको पता होगा कि कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एंड दैट इज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच. और अगर किसी को फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो यहाँ पे आपको एक अपर एज मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स. सो इफ़ यू आर समवन जिसने अपने स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज ऑप्ट करी थी, देन प्लीज़ ब्रश अप योर फ्रेंच स्किल्स. थोड़ा और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में सीख के आओ, क्योंकि जब यहाँ आओगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द credentials. So if you are someone who is looking to enter into the banking field, then there are 2 credentials which you should definitely check out, and these are CIFC and CSC. CIFC is Canada Investment Funds course, and this is conducted by Investment Funds Institute of Canada, जिसे हम यहाँ पे IFIC कहते हैं. And the other is CSC, which is Canadian Securities course, and this is conducted by Canadian Securities Institute. So these 2 credentials are a must if you are planning to make a career in the banking. और ये मैं सिर्फ अपने experience से नहीं कह रहा हूँ. In fact, I talked to a branch manager of one of the top 5 banks in Canada, and I asked that if someone is planning to make a career in the banking field in Canada, तो क्या करना चाहिए? So he said that if the person does not have any prior banking experience, then they should do IFIC, that is the IFIC course, and if the person already has a prior banking experience, then they should do CSC, because it would give them a good knowledge about the financial products in Canada. And ये courses कोई लंबे चौड़े courses नहीं हैं. These are online certifications and can be completed in 1 to 2 months of time. Now let's talk about salaries for some of the financial jobs. A compliance officer can earn between $85,000 to even $145,000 per year, I mean Canadian dollars per year, or even more. If you become a director or a chief compliance officer, then you can earn more than $200,000 as well. A cost accountant can start from $50,000 and go up to $130,000 depending on your seniority. Financial analysts can earn between $45,000 to even $140,000 Canadian dollars per year. Bookkeeper can start from $41,000 and can go up to $75,000. Accounts receivable and accounts payable clerk can earn between $40,000 to $60,000, and a payroll administrator can earn between $49,000 to even $75,000 Canadian dollars per year. Now let's talk about the technology field, that is IT. So COVID-19 has placed a greater emphasis on the need of skilled technology professionals to take care of their critical operations and serve their customers. Hence, IT professionals are high in demand. And the technical skills that would be most relevant for the IT professionals are Agile and Scrum, SQL, Java, Python, and Cloud. And even for the IT professionals, some soft skills are important. And the soft skills that employers are seeking the most are change management and project management. Now let's talk about some of the IT positions that are in demand and would be in demand. And these are technical professionals with expertise in artificial intelligence and machine learning, software developers and app developers,
DevOps engineer to maintain their IT infrastructure, data analysts and data scientists, and even technical support staff. Now let's talk about the salaries that you can expect for these jobs. A product manager can earn between 89,000 to 1,44,000 Canadian dollars per year. Scrum Master can earn between 70,000 to 1,24,000 dollars per year. Software developers can earn between 67,000 to 1,34,000 dollars per year. Data scientists can earn between 91,000 to 1,57,000 dollars per year. Quality assurance analysts can earn between 62,000 to 1,16,000 dollars per year. And technical support staff can also earn between 45,000 to 80,000 Canadian dollars per year. Let's briefly discuss about the marketing and creative jobs as well, because it is expected that the companies who invest in innovative marketing ideas and creative campaigns are likely to perform better when the conditions will improve. So probably we'll see a rise in the demand for marketing and creative jobs as well. So the hot jobs that would be in demand are customer experience manager, digital marketing specialists, social media manager, SEO and SEM analyst, market researcher, and e-commerce content strategist. Now let's talk about the salaries that you can expect for these jobs. So a graphic designer can earn somewhere between $53,000 to $93,000. A photographer can earn between $45,000 to $80,000. Video editors can earn between $54,000 to $78,000. Content strategist can earn between $58,000 to $1,05,000 Canadian dollars per year. Market researcher can earn between $50,000 to $85,000. SEO specialist can earn between $50,000 to $90,000, and customer experience manager can earn between $56,000 to $80,000 per year. So आज हमने बात कर ली इन 4 फील्ड्स की. So as per my knowledge, these are the 4 most popular fields in Canada. But अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि what about doctors? Because healthcare is also a big industry in Canada. So the reason that I did not cover that in this video is, पहला, एक तो मुझे मेडिकल इंडस्ट्री की ज़्यादा नॉलेज नहीं है. दूसरा, इट इज़ वेरी रेयर कि डॉक्टर्स जो इंडिया या किसी और कंट्री से कनाडा में मूव होते हैं वो यहाँ पर भी डॉक्टर ही बने, बिकॉज इट इज़ अ रेगुलेटेड फील्ड इन कनाडा. और कनाडा के टर्म्स में डॉक्टर बनना इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, और इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. So doctors coming from India, Pakistan and other countries, they do not prefer to invest so much of their time and money once again to become a doctor. So mostly they move towards becoming a medical technician, such as X-ray technicians, ultrasound technicians, or some related fields within the medical industry if they want to remain in the healthcare sector. But we have seen that doctors coming from India and other countries, वो यहाँ पे आके कभी इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन जाते हैं या अपना कोई और बिजनेस खोल लेते हैं. दे आर प्रीटी मच हैप्पी. सो यहाँ पे यही है कि इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा, देन बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज योर करियर पाथ्स इफ रिक्वायर्ड, बट मोस्टली यू वुड नॉट हैव टू, सो डोंट वरी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो. हम आगे भी ऐसे जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज और जॉब मार्केट रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स जो किसी भी न्यू कमर के लिए हेल्पफुल रहेगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच कंटेंट, देन आई एम श्योर कि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा. सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ.